Now it's time. Assalamualaikum, everybody. This is the original Scary Ummi, and we're here with Weekends of Joy, which is a regular weekend session जो हम लोग कर रहे हैं with Institute, the new coolest thing as far as building your own school for your children is concerned. So today we have, so basically हमारा जो है weekends of joy, इसका ये मकसद है कि आप लोगों को हर वीकेंड 2 या 3 दफा हम लोग ये सेशंस करते हैं एवरी वीकेंड, एंड आप लोगों को नए नए टीचर्स, नए नए ideas, नई philosophies से introduce करें. Today we have a very exciting tutor, and she's also from the Institute platform. मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं, to download Institute, it is a free app. We have uploaded the links on the group and we will upload them again. अगर आप लोग during this session download करोगे, so you guys will get 1000 rupee का free credit which can be used to book any teacher of your choice on Institute. So it's super simple to do, like super exciting and super easy to do. So do download the Institute app. Iske links, it's available on the Google Store and on the Apple Store. तो आप इसको download करो. अगर आप लोग अभी during the session download करोगे तो आपको 1000 rupee का free credit मिलेगा. So now let me introduce Kehkashan Sahar with you. She is a very well-known tutor from Karachi. Her specialty is computer science. She's also a robotics teacher, and robotics is probably like the new in thing. All are like Kian and Ahil, all 3 of my kids are doing robotics, and it's really important. And like ये जो हमें COVID की वजह से extra free time मिला है, it's a good opportunity to spend this time. It's a good opportunity to spend this time doing, teaching the kids new and exciting things like robotics, like coding, like STEM, etc. So, Kehkashan, welcome to Scary Ummi. Tell us a little bit. Thank you so much. Assalamu alaikum, everybody. I have completed my computer information system engineering from NED University of Engineering and Technology, and currently I'm working as a computer O-levels teacher and robotics trainer as well, because I think robotics and automation is very, very important for the future and for the time going on at the moment as well. And the students who are at the moment trying to find out which field we choose, or should we go to this track or that track, I just would like to suggest them, okay, whatever you choose, you must remain in touch with Kehkashan, repeat करती हैं, आपकी थोड़ी सी आवाज drop हुई है. Okay, fine. I was just saying that this is very important to remain in touch with computer science, because computer science and automation and robotics are just going to take over in the future. ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत important हैं for the students who are at the moment or who are currently trying to opt for any field. For example, if they are willing to become a doctor, or if they want to go to the entertainment industry, or if they want to become an accounts person, any field you choose, you must be equipped with the required skill of computer, so that you can do everything perfectly, because computer science and automation is everywhere, हर जगह पर आप कहीं पे भी जाते हैं, even if you are a doctor, or if you are an accounts person, or if you go to the industries, robots and automation is there. कंप्यूटर साइंस आपके लिए हर जगह आपको मिलेगी. तो कंप्यूटर साइंस और एंड द करंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक हैज प्रूव्ड इट करेक्ट to a very much extent that without computers you can't make do. ठीक है, everybody is using computers, and computer is the only way to remain in touch with the businesses and to run the workflow smoothly. So computer is very, very important. Computer science, robotics and automation, all these things are very important. So whatever field you are planning to choose, you must be equipped with the required computer skills, and you must have all the related skill sets, so that whatever you are doing, whatever you want to do, you can do that perfectly in the future, inshallah. Okay, so a couple of people have a few questions. कि ये जो
ये जो होता है ये जो computers and robotics and coding हम्म, है, how early should we start a child on it? Because like देखिए, for example मैंने देखा है कि 6 years के लिए भी courses निकल रहे हैं, तो आप जी, बताएं what is a good age to start these? देखिए, previously in the past the things were quite different. The computer was just for the field of IT industry and that's it. But now the computer has been adopted in all the other industries as well, right? For example, accounts, medicine, and the other fields also are opting for computer. So computer from very early age is very important. In my school, even we have started robotics from grade 4. The grade 4 children are also learning robotics, and of course they are not being given the complex instruction set of the robotics. They are just We are just trying to first of all build the interest in them, okay, so that they can start taking interest in all these things, so that later on they can start programming. First they need to take interest. So this is the first challenge that we have to build the confidence, and we have to try to remove the hesitation that robotics is not as difficult as it sounds. Is It's very easy. Of course initially things are quite different for the four graders, of course, but things with the passage of time things become very easy, and they must be equipped with the required skills from the very early age. So I would suggest that the robotics should be started, and the programming, there are many software that are offering programming with a very user friendly and very क्या कहना चाहिए कि easy user interface, मतलब जहाँ पे the software is very colorful and there are many attractive shapes and all that. So programming with the help of those softwares becomes very easy and becomes very attractive for the early age students. So I would suggest that it should be जैसे started आप from ये grade 4. बताएं कि like a lot of these robotic courses उनमें जो छोटे बच्चे होते हैं like Hmm. 3, 4, 5, I think वो लोग लेगो की बात करते हैं या Hmm. बिल्ड, इसका मतलब is Lego like the first step towards like Lego botics and ये जो चीजें हैं, are they like the first step or is it a good idea कि आपका बच्चा जब like 18 महीने का भी हो तो आप Lego and building blocks और ये चीजें कर दो, like Lego का क्या link है with all this? देखिए, लेगो अच्छा है। बहुत इनिशियल जो हमारे पास ग्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 से पहले अगर ग्रेड 2 या 3 से आप स्टार्ट करवा रहे हैं उनको रोबोटिक्स, सो दे मस्ट स्टार्ट विद लेगो, क्योंकि वो इट्स काइंड ऑफ मोर इंटरेस्टिंग टू यूज, और वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। बट इवेंचुअली दे हैव टू कम टू द माइक्रो कंट्रोलर फॉर रोबोटिक्स, ठीक है? Micro controller is the final ultimate milestone that they have to achieve. So we asked them in my school. We have started from microcontroller. We haven't used Lego over there because Lego is just like plug and play thing. So exposure is a little less in Lego bots. तो हमारे पास हम बिल्कुल माइक्रो कंट्रोलर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इवेंचुअली रोबोटिक्स इज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड द यूज ऑफ ऑल सेंसर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो वो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि करें, बट जस्ट टू गिव देम अ लिटिल एक्सपोजर दे कैन स्टार्ट विद लेगो बॉट्स। Okay, great. So, what are kya courses? Like, what courses are you offering on Scary Yummy? And like, if somebody wants to engage you, what courses? किस तरह के courses की possibility है? देखिए, वी आर ट्राइंग टू मेक स्टेम एजुकेशन एज वाइडली अडॉप्टेड एज पॉसिबल, क्योंकि स्टेम एजुकेशन इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू टेक ओवर ऑल द मार्केट प्लेसेस, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें अभी से ही यूएस में भी और दूसरे जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उसमें देयर इज हाई डिमांड ऑफ स्टेम एम्प्लॉयज। ठीक है, वहाँ पे आपके पास वो ये कहते हैं कि द एम्प्लॉयज दैट वी हैव एट द मोमेंट, they are just kind of student they were just kind of students who were just taking the lectures from the teachers, and they were just filling up their copies, and they were filling the question papers, and they got very high CGPA, and they were very good students, but they have very less exposure to the practical perspective of the scientific phenomena। ठीक है, तो वो एक्चुअली उनको जो काम करना है उसको उस चीज का एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, so STEM is a kind of education that gives you the practical perspective of all the scientific phenomena that the students learn in the classrooms. For example,
अगर वो if they are learning state change of matter and other kind of scientific phenomena, like they are learning how the photosynthesis takes place and how other things are going on, so they just learn it. The teacher is giving the lecture, they are just writing it down, noting it down, they're just doing the paper, and then they forget it, because obviously they are just doing it, and by just writing things they cannot retain the information, right? So when the STEM education is actually learning plus doing, ठीक है, so they learn it, and when they do it then they retain the information, ठीक है. तो आपके पास ये STEM में, हमारे पास STEM is तो the स्टेम लाइक बहुत से लोग हैं जिनको स्टेम और फिर देयर इज आल्सो आई थिंक स्टीम. ये स्टेम और स्टीम क्या चीजें हैं? आप अगर इनको सिंपल वर्ड्स में समझाएं टू दोज दैट डोंट नो व्हाट दीज आर. देखिए STEM and STEAM में there is not much difference. Can we have the presentation, sir, so I can explain the difference? Um, can you see the screen? Can you see the presentation? Yes, I can. Okay. STEM learning. Okay. So STEM learning is actually the combination of four terms, four subjects: science, technology, engineering, and mathematics. And if we talk about STEAM, so there is an additional A over there. ठीक है, and A means arts. ठीक है. So STEM और STEAM में हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यही science, technology, engineering, and mathematics में जब when we include arts as well, so that they can build the creativity, then it becomes a STEAM. ठीक है. But as for now, we are dealing with STEM, science, technology, engineering, and mathematics. So people must have heard that there is science as a subject, separate subject, and mathematics as a separate subject. But people must be wondering why technology and engineering is here. Because at this early age, in the primary and secondary level, technology and engineering is quite new to here. But science and mathematics are the subjects, are the informational subjects, and technology and engineering are the fields where we can apply that scientific and mathematical information. So STEM is the combination of learning plus doing it. So technology means use of that scientific information to build a technique, and engineering is the use of that technique to build something, to create something. ठीक है. So science mathematics is actually there as a subject that provides you the required information of scientific phenomena and the mathematical calculations, but technology and engineering is deals with creating something, building something, so that uh, students' critical thinking and problem solving skills can be polished. तो ये STEM जो है, ये हमारे पास सिर्फ लर्निंग नहीं है और सिर्फ उसको एग्जाम आपने बस लर्न करनी है, जस्ट मेमोराइजिंग थिंग्स एंड यू आर taking the exam. It's not about that. It is getting the information and then using that information. The application of that information is there with STEM. तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रिटेन कर जब सकते हम हैं. कहते हैं स्टीम, जब हम स्टीम की बात करते हैं तो स्टीम में जो ए है, does that stand for art? Yes, that means to build a very effective design of whatever you are creating. Okay, makes sense. So ठीक है. ये जो है STEAM and STEM, ये around the world अब like मतलब play group level पे शुरू हो रहा है. What age does this start at? Yes, it starts from very initial stages like Montessori and बिल्कुल जो हमारे सीनियर लेवल्स होते हैं उससे हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं. नर्सरी, Montessori 1, 2, 3. फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज वी मस्ट स्टार्ट इट. अभी भी बहुत कम स्कूल्स में ये चीज़ ऑप्ट की गई है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितनी जल्दी लोग इसको अडॉप्ट कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि मार्केट में आगे आने वाली जितनी भी जॉब्स हैं उसमें वो डिमांड यही है कि STEM हो, सो दैट दे हैव दी. फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर आपको बात बताऊं कि हम अपनी व्हेन वी कंप्लीट अवर एजुकेशन वी गेट द डिग्री, एंड व्हेन वी एंटर टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस. ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच एंड वी हैव टू गेट डन विद ऑल द थिंग्स, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव डेवलप इतना नहीं हुआ होता. जब हम एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जाते हैं देन ओनली वी विल बी एबल टू वी सी हाउ थिंग्स आर गेटिंग डन प्रैक्टिकली.
तो ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स ये अपनी जो स्टेम लर्निंग है उसको डेवलप करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इवन इफ दे आर लर्निंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे नो हाउ टू अप्लाई इट. अभी हम क्या करते हैं कि वी आर जस्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज, बट वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई that mathematical equations or that mathematical exercise to the real world. हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीजें बच्चों को नहीं पता होती हैं, वो एक्सरसाइज सॉल्व किए जा रहे हैं, बट दे डोंट नो ये दुनिया में कहाँ पर अप्लाई हो रही हैं और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं और कहाँ पे हमें जाके इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, साइंस में जिस तरह के डिफरेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सर्किट्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, and different other concepts. So students don't know how to apply it and how things are created with the help of these scientific information. तो उस चीज का एक उनको पर्सपेक्टिव देने के लिए स्टेम हमारे पास आता है, जिसमें हम स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं. टीचर जस्ट गिव्स द इन्फॉर्मेशन एंड देन शी बिकम्स द असिस्टेंट ऑफ द स्टूडेंट, एंड इट इज जस्ट we just give them free hand ke whatever they want to create, they are allowed to do that, so that we do not want to just fix them into a specific mold as just to kill their creativity. तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती हैं STEM एजुकेशन में. एंड इवेंचुअली द बेस्ट वे टू डिलीवर STEM एजुकेशन इज रोबोटिक्स, बिकॉज रोबोटिक्स इंटीग्रेट साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वेरी इफेक्टिवली टू क्रिएट डिफरेंट ऑटोमेटिक सिस्टम्स. तो रोबोटिक्स जो है हमारा वो ही STEM एजुकेशन कैन बी डिलीवर्ड इन मेनी वेज. रोबोटिक्स इज जस्ट वन ऑफ दोज वेज कि जिसमें हम STEM एजुकेशन दे सकते हैं. तो इसमें हमारे पास लेकिन रोबोटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिलीवर स्टेम एजुकेशन, क्योंकि वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर लेता है. बट स्टेम एजुकेशन कैन बी डिलीवर्ड इन अ किचन और इन अ गार्डन एज वेल. मॉम्स जितनी भी इस वक्त सुन रही हैं, दे मस्ट बी ऑब्जर्वेंट ऑल द टाइम कि if they encounter any scientific phenomena anywhere or in the garden or in the kitchen, if she is just boiling the water or cooking food, she must be observant, and she always needs to point out that just look what is going on over here. This liquid state is turning to gaseous state, and how the electrons are moving inside. So always just point out things so that they can learn by seeing or by watching and by doing, so that they retain all the information and they can apply it. So STEM education can be delivered in many ways, but robotics is one of the one of the most widely adopted ways of delivering STEM education, because it integrates all these subjects very effectively. Yes. अच्छा मुझे आप ये बताएं कहकशां के ये जो STEM and STEAM है, somebody wants to teach it at home, right? तो इसके लिए कोई tips भी मिलती हैं? Do you need to buy any special equipment or can you just like आप मतलब जिस तरह आपने भी एग्जांपल दिया है कि अगर कोई खाना भी बना रहा है तो वो पॉइंट आउट करे, so is that what मतलब मदर्स को बस एक अप्रोच सिखाने की जरूरत है? जी, ये देखें, एक तो ये कि हमारे पास ये रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की तो अपनी एक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली थिंग्स आर वेरी मच गोइंग इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हमारे पास चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी विद द लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस. तो हमारे पास ऑब्वियसली ये एक तो फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास. But if you want to give them the exposure of all the scientific phenomena, yes, you can do it at home as well. आप उसके लिए ऑब्वियसली मदर्स को खुद भी इतना साइंटिफिक जो है वो उनको फिनोमिनन्स के बारे में डिटेल्स पता होना ज़रूरी है कि वो उनको बता सकें कि किस तरह से कोई भी साइंटिफिक फिनोमिना है वो हो रहा है, या फोटोसिंथेसिस एंड हाउ प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट टू ग्रो, क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है. तो हर जगह पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. आप STEM एजुकेशन घर पे भी आप उनको दे सकते हैं बाय just asking them to observe all the scientific phenomena. Science is everywhere around, ठीक है. तो वो अगर आप इस तरह से कर सकती हैं कि उनको पॉइंट आउट करें हर चीज़ के बारे में जो भी जिस तरह से भी हो रही हैं और उनको एक्सप्लेन करें, तो वो भी STEM है. वो भी STEM है जिसमें भी आप अगर लर्न कर रहे हैं बाय अप्लाइंग समथिंग और बाय डूइंग समथिंग, तो दैट इज STEM. Yes. ओके दैट्स ग्रेट. अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात किसी ने कमेंट की है कि गर्ल्स का इंटरेस्ट स्टेम में पीक करता है मिडिल स्कूल में और फिर ड्रॉप ऑफ कर जाता है, इसकी क्या वजह है? Just because they think that they don't want to pursue a career in computer science or something like that,
but this is not good. I would highly recommend girls that you must excel in computer skills, because ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा suitable उनके लिए field रहती है, because there are other types of engineering and other types of professions कि जिनमें उनको जाके फील्ड पे काम करना पड़ रहा है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक इंजीनियरिंग होती थी और भी बहुत सारी, तो उसमें उनको क्या होता है कि फिर वो फील्ड्स पर उनको जाके काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके अगर इफ़ यू ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स और थिंग्स लाइक दैट, तो द ऑफिसेज और these kind of areas are nearer to the residential areas. ठीक है, एक तो ये भी बात है कि इनको इस चीज की वजह से भी और एक अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है दैट यू आर जस्ट वर्किंग एंड प्रोग्रामिंग ऑन दी सिस्टम। और इसके अलावा भी गर्ल्स को इस चीज में बहुत ज्यादा अब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक दे आर, और प्रोग्रामिंग और ये सारी चीजें हैं, दीज आर वेरी, वंस यू, इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, इफ यू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन ऑल द होल एक्सरसाइज बिकम्स वेरी इजी फॉर यू एंड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चीज में आना चाहिए और कोशिश करें इसको करने की, और जिस हद तक आप कर सकती हैं, क्योंकि आगे जाके ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाती हैं, इफ यू डोंट लाइक कंप्यूटर्स, तो आपकी जान छूटने वाली है वहाँ पे। आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस से जो है वो डील करना पड़ेगा आगे जाके। और फिर ये होता है कि अगर लड़कियां नहीं करती हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, तो वो किसी चीज़ में स्टक हो जाती हैं, सो दे आर कॉल्ड, मतलब अदर्स थिंक दैट दे आर डम। ये तो लड़की है, इससे होगा नहीं, इससे नहीं हो सकेगा ये, तो यू मस्ट prove yourself in front of them, and you must first of all you must equip yourself with the required computer skill set so that you remain confident, because with computer, if you learn computer science and robotics, then you will be able to perfectly do whatever you want to do. आप जो भी करते हैं उसको आप बगैर कंप्यूटर्स के बिल्कुल परफेक्टली और बहुत 100% उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। Okay, can you share some examples? Yeah, ये जमीन का जी, देखिए यही मैंने एक तो ये चीज़ें बताई हैं कि अगर तो आप साइंटिफिक फिनोमेना जो भी आसपास आपके हो रहे हैं फिनोमेना, उसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं, तो आप उसी तरह से उनको बताएं कि किस तरह से हो रही है, उनको हमेशा पॉइंट आउट करवाएं चीज़ें जो भी आपको लगता है कि आप उनको बता सकती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बता सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको ज़रूर एक स्टेम एजुकेशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टेम एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी इस प्रेजेंटेशन में आगे कि इन द इयर्स अहेड द जॉब ग्रोथ ऑफ STEM employment is 17% higher than the other sectors। ठीक है, तो जितनी भी हमारी STEM की जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं आगे जाके, तो बच्चों को अभी से ही आप लोगों ने इस चीज़ में एक्सपर्ट बनाना है ताकि वो आगे जाके इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर सकें। Absolutely. So can I have the presentation so I can tell them the facts and figures about the STEM education? Okay. A lot of schools Yes, abroad are now becoming STEM and STEAM. Okay, आप yes, शुरू करें yes. fast. ठीक है, so these are the key skills that are developed in students through STEM are problem solving, creativity, critical analysis, teamwork, independent thinking, initiative. They are able to take initiatives. They become very effective communicator, and digital literacy is also increased. So these are actually the skills that are required by the employees who are going to do something for their company. So this is the checkpoint that you must set, that the student or your child must grow these skills so that he or she becomes an effective employee. तो ये जो सारी स्किल्स हैं ये आप के जो बच्चे में डेवलप हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन। और ये कुछ एक चार्ट है, projected job growth of STEM employment is 17% and non-STEM employment is just 9.8%। ठीक है, तो आगे जाके आगे आने वाले वक्तों में जो STEM employment है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। STEM education, STEM educated जो बच्चे होंगे या जो लोग होंगे उनकी
जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और STEM इंक्लूड्स कंप्यूटर ऑक्यूपेशन, रोबोटिक्स, इंजीनियर्स, STEM related management and all the others are over there. Computer occupations, as you can see, is much higher than other, and computer includes obviously robotics and other things. तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, एंड दिस इज द एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर डेवलप्ड बाय यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स. तो ये एक एक्चुअल सर्वे है जो उन्होंने किया है और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि स्टेम वर्कर्स अर्न 26% मोर देन दोज विदाउट अ स्टेम बैकग्राउंड. तो इस चीज़ के लिए भी यू मस्ट प्रिपेयर योर चाइल्ड, ताकि वो आगे जाके अगर इस तरह के कोई सिनेरियो होता है कि इस तरह की डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से आती है तो आप पहले से ही उसके लिए तैयार हो. अब इसका तरीका क्या होगा कि हाउ टू परस्यू STEM एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड. यू मस्ट फर्स्ट लर्न अबाउट STEM and then you must How research can and parents learn about STEM? Like आप थोड़ा सा बताते हो, how do parents learn about STEM? parents don't need to learn about STEM. They must get their child to learn about STEM, क्योंकि obviously अब उनका तो obviously वो फील्ड में आ चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में उनका जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो STEM एजुकेशन परस्यू करें और फिर वो उस चीज़ में अपने वो स्किल्स जो हैं वो अपने अंदर डेवलप कर सकें. ठीक है, तो वो किस तरह से ये कर सकते हैं कि उनके बच्चे पहले ये चीज़ करना शुरू करें, STEM एजुकेशन में आएँ कि they must learn about STEM, they must research, they find a STEM educationist. STEM educationist आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और वैसे भी अगर आप स्कूल्स में देखें तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अब पाकिस्तान में बहुत कम है स्कूल्स, लेकिन वैसे अब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा स्कोप है STEM एजुकेशन का. Even there are many successful people in the people who are very successful in their life, they are just recommending all the parents to get the children educated with STEM. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कि आप उनको अभी से ही STEM के लिए तैयार करें. और STEM में हम जिस STEM की बात करें दैट इज़ रोबोटिक्स. ठीक है, तो कोई सा भी आप STEM स्टार्ट ले सकते हैं किसी भी STEM एजुकेशन से. तो STEM एजुकेशन एक बहुत बड़ा एरिया है, इट्स अ वाइडर एरिया. रोबोटिक्स एजुकेशन इज जस्ट अ माइक्रोकॉस्म ऑफ दैट STEM एजुकेशन. मतलब रोबोटिक्स एक तरीका है STEM एजुकेशन देने का, बिकॉज इट इंटीग्रेट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो इस तरह से भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं. एंड और वो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, वो प्लेफुली बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है. फॉर एग्जांपल रोबोटिक, देयर आई हैव डेवलप्ड अ ब्लूटूथ कंट्रोल्ड रिमोट कार, एंड दैट कार इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ. मतलब अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और आप वो कार जो आपने डेवलप की होगी विद द हेल्प ऑफ दोज इक्विपमेंट्स, तो वो आप उनसे बना सकते हैं. तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है सुनने में. और बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि वो जब व्हेन दे जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएशंस वो चीज़ें करते हैं. दे जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग वंडर्स दैट आर जस्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन के व्हाट दे कैन क्रिएट, क्योंकि दे आर मच मोर इंटेलेक्ट. You are going to also show us a demo, right? Can Yes, we see it? yes, yes. This is just a demo of a very simple system जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे. बहुत सिंपल है ये, बहुत जल्दी हमारे पास बन जाता है. सो जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि हाउ थिंग्स कैन बी डन वेरी इजीली. So I am going to create a burglar alarm system. Burglar alarm system is kind of an alarm system which prevents the intruders to come and take away all the precious things that you have. For example, just consider that it's a diamond ring. वैसे तो ये नहीं है. Just consider that it's a diamond ring and I want to keep the intruders away from it. So I want to create a system for it. Say if I am not even there all the time, so the system can sound an alarm so that the people who are there can prevent the intruders. How we can do it? I have an ये equipment that क्या is, है आपके सामने? Like what is this thing called? Diamond this ring is तो मुझे समझ गई है. this is a microcontroller. This is the brain of the robot actually. देखिए, robots are just a replication of humans. I have always said this कि the humans are there. Humans are the most intelligent creatures on the earth.
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ह्यूमंस किस तरह से चीज़ों को, हाउ दे टेक डिसीजंस, दे जस्ट सेंस विद देयर सेंसर्स, विद देयर सेंस ऑर्गन्स, and then the sense organ transfer the information to the brain, and then the brain takes the decision and do whatever is being processed. ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास रोबोट्स भी काम करते हैं कि दे हैव दिस ब्रेन ओवर हियर, दिस इज द ब्रेन ऑफ रोबोट, ठीक है, और इसके साथ हम कुछ सेंसर्स अटैच कर देते हैं, सेंसर्स आर देयर टू ऑब्जर्व द सराउंडिंग, और अगर कोई भी चीज़ उसको अनसूटेबल लगती है या कोई भी चीज़ उसको गलत लगती है तो वो फिर क्या करता है, एक अलार्म बजाता है या फिर कोई लाइट ब्लिंक करता है या कोई भी काम वो जो इन रिएक्शन करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ ह्यूमंस, इफ दे हैव एक्सीडेंटली पुट देयर हैंड ऑन अ फ्लेम, so what they do, the hand just transfers the information to the brain, and then brain orders the hand to just withdraw the hand from the flame. तो इसी तरह से ये रोबोट्स आर नथिंग बट अ रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमंस, ताकि वो काम जो ह्यूमंस करते हैं वो रोबोट्स के थ्रू हो सकें और ह्यूमंस को हर वक्त वहाँ पे ना रहना पड़े, इट इज जस्ट टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। तो ये अच्छा हमारे पास कहकशान, ये जो है माइक्रो कंट्रोलर, ये आराम से अवेलेबल होता है? जी जी जी, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, इट इज दी काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनो ऊनो, एंड इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पसेस। बहुत सिंपल प्रोसेसर है ये, इसी तरह से और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन होती हैं, बहुत बड़े प्रोसेसर्स भी होते हैं, बट दिस वन इज फॉर एजुकेशन, और बहुत सिंपल है ये, बहुत आसानी से और बहुत मिनिमल प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट इट, दिस इज माई LDR लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, इसको मैं कनेक्ट करती हूँ जस्ट टू शो यू, लेटर आई व्हेन यू जस्ट book a session with me or you join the course, then I'll tell you all the details, but since we don't have much time, so I am just showing you how these things work. So this is a buzzer, अभी अच्छा, buzzer और बहुत छोटा, मिनिमम आप थोड़ा सा हमें आइडिया देती हैं कि मिनिमम कितने एज के बच्चे कैन ज्वाइन इन? मिनिमम 8 to 16-17 तक मेरे ख्याल से उनके लिए ठीक रहेगा। एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक बहुत सी रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स अब होती हैं पाकिस्तान में, आप उनके लिए भी तैयार करती हैं बच्चों को? जी जी, मैं करती हूँ। तो आपके कोई स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा किया हो या जो लाइक रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स में गए हो? जी जी, मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमारे पास एक जनरेशन है, एक स्कूल जहाँ पे कंपटीशन हुआ था, सॉकर कंपटीशन भी हुए हैं और कंपटीशन भी, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं बहुत सारे, उनके कंपटीशन भी हुए हैं जहाँ पे हम बच्चों को लेकर जाते हैं और उन्होंने सर्टिफिकेशंस भी वहाँ पे ली हैं और काफ़ी अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें हो जाती हैं अच्छे तरीके से। देर आर मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट स्टूडेंट्स कैन डू, मतलब ये वो ऐसा है कि इसको स्टेम हम क्यों कहते हैं कि आई जस्ट टेल देम कि ये सेंसर्स हैं, ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें, एंड देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को खुद कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं, पहले अपना प्रोग्राम हम इसके अंदर लोड कर देते हैं। ये बजर मेरा थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा। जो इक्विपमेंट है, इज इट एक्सपेंसिव कहकशान? नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इट इज अराउंड 350 और 400 इज फॉर दिस मच मनी, एंड ये बजर्स और ये सारी चीज़ें तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक आपको ओवरऑल एक किट लेने के लिए जिसमें सारे रिक्वायर्ड सेंसर्स हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी 2000 रुपीज़ ही चाहिए होंगे बस, with all the sensors, with this microcontroller, the cable, the everything that is required, वो सब आप उससे कर सकते हैं। Let me load the program first, ताकि मैं इसको चला के आपको दिखा सकूं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास मैंने कनेक्शंस कर दिए हैं, बजर को मैंने निकाल दिया है अभी।
क्योंकि बजर में इसमें मेरा एक पहले से प्रोग्राम लोडेड है, तो मैं पहले अपना प्रोग्राम अपलोड कर दूं, फिर उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो है, अब जब when somebody touches the ring, तो basically buzzer blow करेगा। जी, और लाइक आप कह दैट। रही है जो रोबोटिक्स की किट है वो बस 1000 रुपए की होती है, राइट? जी, जी, वो किट आपको मिलेगी नहीं, वो मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स लेके आपने किट बनानी है अपनी। तो वो अच्छा, जो नहीं मैक्सिमम तो उसके कहकशा चार्जेस wouldn't it be 1000 easier से अगर आप कोई किट, मतलब अगर जो लोग रजिस्टर करें उनके लिए आप किट तैयार करके उन्हें भेज दो? मे बी I don't know, I'll इन, have to talk to Sir Adil first about it. बट अदील आई थिंक, हाँ अदील कह रहे हैं कि वो किट्स जो भी लोग करेंगे ना रजिस्टर, दे विल ऑल गेट अ किट। सो दैट्स ठीक है, दैट वुड बी अब वेरी ये मैं हेल्पफुल। अमेज़न से किट्स मिलकर उन सबको मिल जाएंगी, तो आई जी, थिंक जी, उस तरह। अमेज़न से मिल जाती हैं। ठीक है, अभी मेरा सिस्टम बन गया है। इफ आई ट्राई टू टच द रिंग तो सिस्टम विल स्टार्ट। Oh wow, this is so cool. That's like a burglar alarm. That's really cool. And I think once you do your demo class, we're going to ask the children to make these and then like do a competition. I love this. ठीक है, सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू टच द रिंग एंड द साउंड स्टार्ट्स, बजर स्टार्ट साउंडिंग। वी This कैन is चेंज really द बजर ऑल्सो, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बजर्स जो कि हम चेंज कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर मेकिंग देम लर्न वी आर यूजिंग दिस बजर, so you can do it with other kinds of buzzer as well which are louder as compared to this one. ठीक है, this is very cool. और ये आपको तो बनाने में 5 से 6 मिनट ही सिर्फ लगे हैं। जी। Wow. So most of robotics, like initially, आपने basically यही equipment चाहिए जो आप दिखा रही हैं। Somebody on Facebook wants to know नाम क्या है किट का? जो किट अगर आप इंस्टीट्यूट के रोबोटिक्स कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगी, यू विल गेट द किट विच इज कॉल्ड आर्डिनो फंडामेंटल्स बंडल। एंड वो आप खुद भी खरीद सकती हैं, या आपको इंस्टीट्यूट में व्हेन यू रजिस्टर यू कैन पे एक्स्ट्रा एंड द किट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस। लेकिन जो कहकशां इज गोइंग टू डू अ डेमो क्लास ऑन इंस्टीट्यूट वेरी सून व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए यू डोंट नीड टू बाय द किट। उसके लिए आई थिंक कहकशां कोई ऐसी चीजें सिखाएंगी बच्चों को जिसके लिए किट नहीं चाहिए होगी। कहकशां, इज इट पॉसिबल टू सेंड, मतलब आप कुछ ऐसा सिखा सकती हैं जिसमें किट ना चाहिए हो, कि किट इज मैंडेटरी? जी। आई वाज आस्किंग यू, इज इट पॉसिबल टू डू इट विदाउट द किट और इज मुझे द ऐसा किट लगता है कि मैंडेटरी? डेमो क्लास के लिए yes, I think it would be mandatory क्योंकि without it they won't be able to do it So maybe they can hands on have expertise. safety चीजें like just the controller and whatever is सस्ता। हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले डेमो जब हम इसका इवेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं वहीं पर ही ये बता दूं कि किस किस तरह से ये कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड, क्योंकि आई हैवंट प्लान्ड येट कि डेमो क्लास में हम क्या चीजें करवा रहे होंगे या क्या नहीं होगा। तो ओके, वी कैन प्लान इट, लेकिन आई मुझे डोंट सिर्फ ये था कि अगर बच्चों के पास चीजें नहीं होंगी तो वो फिर सिर्फ नो। देख पाएंगे ना। इट्स मोर फन जब जी, वो खुद पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए, वी कैन डिस्कस हाँ, दैट लेटर। डू यू वांट टू गो ओके। बैक टू योर प्रेजेंटेशन? नो, नो, आई एम डन विद दैट। Okay, great. Let me see if there are any more questions. So, Kehkashan, आपका hourly rate क्या है on what is your hourly rate on Institute? Like if somebody wants to book you, तो वो आपको मतलब what is your rate? um, I haven't decided it yet, but it will be as minimal as possible. I'll try to keep it as reasonable as possible, but not yet decided. अच्छा, और मुझे बताएं कि आप जो बच्चों को आप वीकेंड्स पर भी अवेलेबल हैं टू टीच, और इज इट अच्छा वो कह रहे हैं कि आपका आवरली रेट नहीं है?
आपका कोर्स है, ओके ग्रेट, सो लाइक ठीक प्रॉब्ली है। लेवल 1 लेवल 2 होगा। सो आप मुझे जी ये जी। बताएं कि जो आपका कोर्स है वो वीकडेज पे होगा, वीकेंड पे होगा, एंड इज इट पॉसिबल अदील फॉर पीपल टू साइन अप फॉर Kehkashan's course अभी भी कि अभी नहीं, like they have to wait for a little while and then sign up? I think this question is for Adeel. Sure, Adil, please come and tell them. Hmm. Adeel is back. Hi, Yeah. Hi so Adeel. I've joined the stream now. Sorry, I was No, not no. able to join earlier. So yeah, basically, we will be releasing more information tomorrow in tomorrow's session. So yeah, we will be having an activity within the app that will be available from tomorrow, and we'll decide a day with Kehkashan, and we'll post that on the app. So for that, everyone needs to make sure they have the app, they have the student account, they have first few sessions. We can keep them as demo session. You can use the 1,000 rupee credit as well to book the trial session, and rest of it we'll make sure that you get like a discount code for Scary Yummy users. So yeah, I mean. Yeah, and a lot of people were confused. Like, let's say if I want to book Kehkashan, how do I Mhm. pay? So yeah, it's we have uploaded some videos. I think if they're available on your page, they can see how to top up the account. So yeah, it's first session they can just book it within 1,000 rupees. We'll try to keep it within 1,000 rupees, so it your free credit covers that session. जब वो हो जाएगा उसके बाद फिर एक सिंपल सी वीडियो हम पोस्ट कर देंगे, उस पे होगा कि किस तरह से टॉप अप करना है अकाउंट। इस वक्त ये है कि वी डोंट हैव कैश ऑन डिलीवरी मॉडल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट लाइक इजी पैसा या कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। सो आवर बैंक अकाउंट डिटेल इज देयर। आप अपना उसके ऊपर डिटेल्स डाल के अपनी जो है हमारी डिटेल्स बैंक डिटेल्स पे अपना क्रेडिट टॉप अप करेंगे, हमारे डिपॉजिट कर देंगे हमारे अकाउंट में, एंड यू विल अपलोड द रिसीट प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑन द ऐप, and automatically within 24 hours we will update your account with the credit. So that's, I think, very simple and easy. उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है. um, and once that's done, then you can start booking the sessions and activities. Aisha, we cannot hear you. I think there's some issue. Okay, guys, just give Adeel a minute. Adeel, I think drop off ho gaye the. But I जी। guess okay. So Adeel will, I guess, send me all the details and I'll upload them. So thank you so much, Kehkashan. It was so Thank you। interesting. मेरे बच्चे लाइक करते हैं रोबोटिक्स, but I don't think उन्होंने अभी तक burglar alarm बनाया है, and it was really interesting. And I And think it's a very lot of easy parents also। talk about, Hmm. yeah, and a lot of parents talk about कि हमने बच्चों को away from like television रखना है, away from screen time रखना है. So this is a really good activity, and through this, like children can kind learn so much, learn like their hand-eye movement becomes better. They understand basic robotics. Yes, This is a yes, fantastic activity. I'm really happy and really glad that you did this demo. And I will definitely. अच्छा वो कह रही है where can I get it in advanced level? So Kehkashan also teaches advanced level, and you can आप अगर institute के app को download कर लें, you can actually then request उधर. They have a number of robotics and STEM instructors. Kehkashan is one of them, and she also teaches at an advanced level. yes.
Great. Thank you so much, Kehkashan. I really appreciate your time. And everybody who's watching, I will be back with yet another session of Weekends of Joy. Thank you. Khuda Hafiz.